भारत इस समय कोविड के गंभीर संकट से गुजर रहा है। मुसीबत के इस वक्त में भारत के बहुत सारे दोस्त देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है और उसमें एक प्रमुख नाम ब्रिटेन का है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्रिटेन के भारत में हाई कमिश्नर एलिस। एबीपी न्यूज में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप सवालों का, मेरी अपेक्षा होगी कि आप सवालों का जवाब हिंदी में दे सकें, तो ये भारत के लोगों के लिए काफी एश्योरिंग होगा। मेरा पहला सवाल यही है हाई कमिश्नर कि ब्रिटेन ने भारत के लिए इस संकट के समय में मदद का ऐलान किया है, बहुत सारी मदद ब्रिटेन से आई भी है। किस तरीके से भारत जैसे अपने दोस्त देश या अपने भागीदार के साथ ब्रिटेन मदद करना चाहता है इस समय में, और किस तरीके की सहायता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा या विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा कि भारत ने दूसरे देशों की मदद की है, इसलिए यह समय है कि हम भी भारत की मदद करें, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या क्या मदद ब्रिटेन भारत की कर रहा है? कोविड को हराने के इस जंग में ब्रिटेन भारत के साथ है। जैसो जरूरी चिकित्सा संसाधन भारत के मदद के लिए भेजे जा रहा है। मेरी हिंदी नहीं अच्छी है, लेकिन पहले 2 शिपमेंट पहुंच चुके हैं आने वाले दिनों में, और शिपमेंट रवाना होने वाले है। और कल रात ही ब्रिटेन ने 3 ऑक्सीजन फैक्ट्रीज, मिनी फैक्ट्रीज, टोटल फैक्ट्रीज भेजने का ऐलान किया है। हाई कमिश्नर, ब्रिटेन ने भी इसी तरीके का संकट देखा था। The UK has also experienced a similar crisis in December when a new variant came, and उस समय में ब्रिटेन ने भी फाइट आउट किया था, बहुत सारे प्लान्स डिरेल हो गए थे। How did UK fight, and what are the best practices, examples जो ब्रिटेन इस समय इंडिया के साथ शेयर कर सकता है, यूके इस समय इंडिया को एक्सटेंड कर सकता है, ऐसे कौन सारे एक्सपीरियंसेस हैं? I was living in London when we had our last big wave last year, and the experience we had is this is very tough. बहुत मुश्किल है in these circumstances. लेकिन it's possible to manage the situation, and that's through isolation, through vaccination, both things which the Indian government is doing, by looking at science and following what the scientists advise us to do, and by the population really getting behind what the government is asking us. And we got through it, and India was helpful to us last year. As Prince Charles said in a statement the other day, we were very helpful on pharmaceuticals, for example. And so now it's the UK's turn, I think, to help India. This is, Vasadaiva Kuntum Bakam, I think is the expression. And this is one world. आपने बिल्कुल ठीक कहा हाई कमिश्नर, ये वाकई में एक ऐसा संकट है जिसमें पूरी दुनिया साथ में है। वी आर ऑल टुगेदर इन दिस क्राइसिस एंड वी ऑल हैव टू फाइट इट टुगेदर। बट एक महत्वपूर्ण जो कोलैबोरेशन था यूके और इंडिया के बीच में, वो वैक्सीन को लेकर ही था। द कोविशील्ड वैक्सीन व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंडिया एंड यूके कोलैबोरेशन. But we have seen certain statements coming from the UK government saying that UK अभी इस समय भारत को कोई वैक्सीन की मदद नहीं दे सकता है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। इस तरीके के स्टेटमेंट को कैसे देखा जाना चाहिए इंडिया में? क्या यूके भारत को वैक्सीन नहीं दे सकता है इस समय, जबकि इंडिया में सबसे ज्यादा क्राइसिस है? So you asked me about vaccines and the vaccine exchange between the UK and India. You're absolutely right that the UK and India, one of the kind of symbols of that is the Covishield vaccine, which is originally funded by British government-funded research in Oxford University, then translated into commercially by AstraZeneca, and then worked on with the Serum Institute of India. So that's a great example of UK-India cooperation. At the moment, India is by far the biggest vaccine producer of the world. The Serum Institute of India is by far the biggest vaccine producer of the world. So, of course, those vaccines at the moment are being produced and are being used in India. We stay regularly in touch with the Indian government about the exchange of vaccines. But at the moment, I think that the Indian
vaccine drive, so important to everybody, is being supported through a vaccine which the research for which was done in the UK and some of the commercialization. So we're very happy about that. For now, India's need is the greatest, and we can see that. But we'll keep in very close touch with the two governments about how we work on vaccine collaboration. हाई कमिश्नर, इंडिया और यूके के बीच में बहुत ही सिग्निफिकेंट साइंटिफिक कोलैबोरेशन है। दोनों कंट्रीज के बीच में काफी इनिशिएटिव्स हैं साइंटिफिक कोलैबोरेशन के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। एज फार एज दिस क्राइसिस इज कंसर्न, कोविड-19 के डिफरेंट वेरिएंट्स एक बड़ी चिंता है पूरी दुनिया के लिए। तो ऐसे में इंडिया एंड यूके कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि आगे भी न केवल वैक्सीन इफेक्टिव हो सके, बल्कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए भी इंडिया और यूके के साइंटिस्ट मिलकर काम करें और जॉइंट प्रोडक्ट बना सके ताकि ये बीमारी और प्रॉब्लम न क्रिएट करे। UK, you're right. Yeah, India is. I think the UK is India's second biggest research partner and biggest European research partner. And another amazing statistic: there are more Indian nationals working in NHS than I think of any other nation outside the UK. And the number of doctors I've already spoken to in this country who have worked in our National Health Service, our NHS. So the human connections are very close. So we have a lot of scientific collaboration. I think that there's the immediate crisis. That's why we've shipped out 600 pieces of medical equipment arriving on Monday, Sombarko, and then last night as well. But I think looking beyond that, I think there are some areas where we could work closer together. Genomics testing, for example, making sure that we create the capability to have proper genomic studies between the two countries, researching into the new variants, also swapping notes on how we can treat this disease as well, because there's lots of experience now in India and in the UK and elsewhere about how to improve the treatments. So we have the immediate crisis, and then I think we have a kind of longer term aim, and that's one of the issues which Prime Minister Modi and Pradhan Modi and Prime Minister Boris Johnson will discuss when they meet virtually soon. बिल्कुल ठीक कहा हाई कमिश्नर आपने। ये एक ऐसी इंटरेक्शन था प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जो कि इस साल 2 बार ऐसा हुआ कि कोविड के कारण टालना पड़ा है। सो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देश जब इससे बाहर आ जाएंगे तो जल्दी ही मीटिंग होगी दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की? We expect them to meet soon. I can't give you an exact date, but they're very keen to meet. I think it'll be kind of weeks, very soon, certainly. I also know the Prime Minister Boris Johnson is very keen to return to India. He knows India well. He's visited many times before. This is a difficult year for travel. He's very keen to come, and it's frustrating that we haven't been able to get a visit in person. But the important thing is to get the kind of new relationship going. A last question, High Commissioner Ellis, that India and UK have been collaborating on many fronts, but as far as the present crisis is concerned, आज की स्थिति में आपने कहा कि बहुत सारी मदद यूके ने दी है, और आगे भी आपकी गवर्नमेंट का आपको इंस्ट्रक्शन क्या है इस चीज को लेके कि भारत से क्या पता करते रहें, किस तरीके की मदद यूके से इंडिया और क्या मदद एक्सपेक्ट कर रहा है इस समय में, और क्या यूके भी अपने यहाँ तलाश रहा है कि वो मदद इंडिया की कर सके ताकि ये क्राइसिस कंटेन किया जा सके? If you're asking me about the kind of today's cooperation on the crisis, we have already the 600 pieces of equipment. We announced last night we're going to send some oxygen concentrators, some oxygen factories for making oxygen, three ones which will come from the UK. We're very keen to focus our effort on the things which India is telling us it really needs. We have a very close collaboration with the Indian High Commission in London and with the Indian government. So we're trying to aim our collaboration very precisely on what is needed. I'd say there are two other elements to that collaboration. One is businesses. We have a lot of UK businesses now looking to support, for example, through provision of oxygen. And another is our diaspora. The India diaspora in the UK is very successful, very active. Of course, many of them are involved with business. Lord Bill Moria, for example, is the president of the CBI. Lord Jitesh Gadia, who is also in the House of Lords, he's very involved in the healthcare business as well. So they are also looking at what we can do. And finally, there's a contribution from civil society more generally. You may have seen a statement put out by His Royal Highness Prince Charles yesterday, in which he recognised the support we needed for India, and the organisation which he founded over 10 years ago, the British Asian Trust, is raising, I think it's raised 3 crore
already of support to give to India. So there is a kind of support from business, there's support from the government, and there's support from the community at large. This is a moment where your maitri, you have to know who your friends are, and this is when a relationship is tested, we really see people coming to the fore to support. So I'm very pleased about that. ये सारी बातें हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में इंग्लिश का फ्रेज भी है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। सो निश्चित रूप से यूके की ये पार्टनरशिप और भी स्ट्रांग होगी इस मदद के साथ में, दोनों देशों के साथ में, और जिस तरीके का साइंटिफिक कोलैबोरेशन दोनों देशों के साथ के बीच में है, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि ये ही बीमारी नहीं बल्कि आने वाली और भी चुनौतियों में दोनों देश अपने रिसोर्सेज के साथ, अपने साइंटिफिक प्रोग्रेस के साथ इस तरीके की चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वासुदैव कुटुंबकम। धन्यवाद। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।